Good morning, students. This is your teacher Neela Mehlawat, and today we'll start with the topic mutation. Now, this topic, dear students, is very important. And if this is clear to you, then you can talk about the genetics, a big portion of the genetics, and you can say the next chapter, that is chapter number 6, is 50% understood by you. If only that relies on this topic only, if you understand this. Okay. And again, a very important topic from the board's point of view. So you take your books, notebooks, keep them ready. We'll start, right? Okay. So let's start, students. Now, what basically are mutations? Mutations होती क्या है? क्या है वो? Why we are talking about them? नाउ सपोज करिए ये हमारे पास अपना डीएनए है, ठीक है. डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, देयर आर पर्टिकुलर सीक्वेंस इन डीएनए एंड दोज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, दोज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, दोज पोर्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, राइट. इफ देयर इज एनी चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में कोई भी चेंज होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज म्यूटेशन एंड इट हैपन्स सडनली, सो दैट इज कॉल्ड ए म्यूटेशन. सो म्यूटेशंस कैन अकर इन द सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स मीन्स द नॉर्मल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. ओके, देन दे विल नॉट बी पास टू द ऑफस्प्रिंग. तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होंगी. एंड द you can say the mutations can occur in the germ cells also. They can occur in germ cells also. So germ cells are also called as the gametes, like sperm and egg. Then in that case, they will be passed from one generation to another. So we can say that rather than the somatic mutations, the germinal mutations, they are very important because they are limited. The somatic mutations, they are limited only to that particular organism, but they will be passed, the germinal mutations, they will be passed from one generation to another. Okay, so now the question comes, are the mutations helpful or harmful? जो mutations हो रही हैं डीएनए में, क्या वो हमारे लिए harmful हैं या helpful हैं? देखिए, mutations happen regularly. mutations जो का जो process है, चेंजेस का जो प्रोसेस है, दे आर हैपनिंग रेगुलरली एंड ऑलमोस्ट ऑल म्यूटेशंस आर न्यूट्रल. मतलब जितने भी म्यूटेशंस होती हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म पर नहीं पड़ता है. सो दे आर कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल. बहुत सारे केमिकल्स हैं एंड द यूवी रेडिएशंस हैं, दे कैन कॉज म्यूटेशंस एंड मेनी ऑफ द म्यूटेशंस दे आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो जो ओवरऑल इफेक्ट हमारे ऊपर आता है म्यूटेशंस का, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में म्यूटेशंस हुई हैं. व्हेन वील कम टू नो, जब उसका कोई इफ़ेक्ट नज़र आता है, राइट. लाइक इफ़ समबडी हैज़ अ स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया हो गया है, सोमैटिक म्यूटेशंस हैं, तो सोमैटिक म्यूटेशंस की वजह से ही स्किन कैंसर और ल्यूकेमिया होता है. तो जब ऐसा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे नज़र आएगा, देन दीज म्यूटेशंस दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूटेशंस जो हैं आपकी सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकती हैं. म्यूटेशंस में इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. दे कैन मेक एन ऑर्गेनिज्म फिट टू द environment, right? Is it clear? Like if you remember, we have talked in class 10 the color of beetle. There was beetles who were living on the green color leaf पर जो है beetles रहती थी. They used to have red color and suddenly some change occurred and they the color changed to green. So the color change from red to green was favorable for the survival of beetles. Okay, so in that case the mutation was very helpful, that was a beneficial. But mutation may also have the harmful effects like leukemia, skin cancer and many more diseases. Okay, so mutations can be both, they can produce harmful effects also and they may help in survival also. Now coming to the types of mutation, this is very important for us because we need to understand what are the different types of mutations. First is the chromosome mutation.
अगर क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन होती है तो ये हमारा क्रोमोसोम है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. ओके, so a chromosome basically has two parts, and these two parts, they're called chromatids. They're called as chromatids. This is called centromere. इस सेंट्रल पोर्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर. और ये जो दो पार्ट्स हैं, द सिंगल पार्ट, दे आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स. सो वन क्रोमोसोम कंटेन्स टू क्रोमैटिड्स. सो क्रोमोसोम म्यूटेशन मीन्स जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है, राइट? जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है, या और देयर इज अ लॉस और गेन ऑफ वन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, or there is gain or loss of one part of the chromosome. Okay, so that will be called a chromosome mutation. Then chromosome mutations can have various reasons. The end result is that the chromosome number has changed, or the part of the chromosome has been added or lost. So there is deletion, inversion, translocation, non-disjunction, and duplication. So there are 5 ways by which chromosome mutations can occur. Okay, now let's take up the deletion first. We'll understand each one of them separately. Deletion का मतलब होता है delete हो जाना, remove हो जाना. Now suppose करिए ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है. Now this portion of the chromosome, it breaks. ये क्रोमोसोम ब्रेक हो गया, टूट गया बीच में से, एंड दिस पोर्शन गॉट रिमूव्ड. नाउ वी हैव दिस क्रोमोसोम नाउ वेयर इट हैज़ लॉस्ट दिस पोर्शन. सो क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट गया है, इट हैज़ बीन लॉस्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम, दैट विल बी कॉल्ड अ डिलीशन. ओके, दैट विल बी कॉल्ड अ डिलीशन. सेकेंड इज इन्वर्जन. अगेन लेट्स सी, सपोज हमारे पास ये क्रोमोसोम है, एंड अगेन वी आर फोकसिंग ऑन द सेम पार्ट. ये हमारा पार्ट है, ठीक है. द अपर पार्ट आई हैव डेजिग्नेटेड विद ब्राउन, लेटर पार्ट आई हैव डेजिग्नेटेड विद लाइट ग्रीन, राइट. अब ये पार्ट रिमूव हो जाता है और उल्टा होकर, इन्वर्ट होकर वहीं वापस प्लेस हो जाता है. इट रिवर्ट्स बैक. नाउ ग्रीन पोर्शन कम्स अपवर्ड एंड ब्राउन पोर्शन कम्स डाउनवर्ड. सो यहाँ पर एक डीएनए सेगमेंट फ्लिप हो गया है, और फ्लिप होकर वो रीअटैच हो गया है. सो क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट लॉस्ट नहीं हुआ है, but it has flipped and attached itself. So this is called inversion. This is called inversion. Third is duplication. Let's see, this is a chromosome. We've labeled it with this yellow part will focus. So chromosome के इस part पर हम focus कर रहे हैं. ये part double हो गया है. Okay, this part has become double. Now see, दिस मीन्स एक जीन की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट हो गई है. इनिशियली इट वॉज ओनली 1 टाइम्स, नाउ इट इज़ ऑफ 2 टाइम्स. और अगर वो पहले 2 बार थी तो अब 4 बार हो गई है. तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्रोमोसोम के अंदर रिपीट हो गई है. क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर जीन जो है डुप्लीकेट हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन, राइट. सो फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट डिलीशन, second we have talked about inversion, and third is duplication. Third is translocation. इसमें this basically involves 2 chromosomes, but these 2 chromosomes they are not homologous. ठीक है. So हमारे पास 2 chromosomes हैं, but ये non homologous chromosomes हैं, और part of one chromosome is transferred to the another. और इसका एक पार्ट इस क्रोमोसोम पर चला जाता है. ओके, लेट्स सी दिस. सपोज हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, राइट. सो वन वी हैव टेकन इट विद वाइट कलर, अनदर वी हैव टेकन विद द ब्लैक कलर, सो दैट वी कैन ईजिली डेजिग्नेट. ठीक है. नाउ अब क्या हुआ, इसका ये पोर्शन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, एंड फ्रॉम दिस वन पोर्शन हैज़ बीन ट्रांसफर टू दिस. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. जब एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है. ओके, दे हैव रियली एक्सचेंज वन पोर्शन विद ईच अदर, राइट. नेक्स्ट इज नॉन डिसजंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट जब when cell divides,
So the chromosome also divides in case of meiosis. The chromosome is reduced to half, right? Non-disjunction means where the chromosome do not separate. Means suppose kariye this is our cell. Okay, this had this chromosome number, one chromosome, it was there. Now during meiosis it was to separate. ये हमारा क्रोमोसोम है एक. ओके, दिस इज टू सेपरेट. इसे यहाँ से डिवाइड हो जाना था. सो वन पोर्शन शुड गो दिस साइड एंड वन पोर्शन शुड गो दिस साइड. बट this chromosome did not separate. So what will happen? One cell will not have this chromosome and another cell will have this complete chromosome. Okay, so this is called non-disjunction, where the chromosomes, they fail to separate during meiosis. And so one gamete will have more than the required chromosome, other will not have the required number of chromosomes. So this same happens in the Klinefelter syndrome, Down syndrome and the Turner syndrome. Okay, we'll discuss each syndrome separately. Now we are discussing all four together. Suppose करिए ये हमारा original chromosome है. You see it is A portion, this is B portion, this is C, this is D, E and F and G. So this is our normal portion or the original chromosome. Duplication means जब एक पोर्शन डबल हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट सिंगल था, यहाँ पे डी पार्ट डबल हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन. यहाँ पर देखिए वो डी पार्ट रिमूव हो गया है. देयर इज नो डी पार्ट हियर, सो दैट विल बी कॉल्ड डिलीशन. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ई एन एफ पोर्शन है. Now in this chromosome you compare, रिवर्ट होकर उल्टा अटैच हो गया है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. ओके, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. तो यहाँ पर ई और एफ पार्ट में इन्वर्जन हुआ है एंड यू कैन सी हियर बी एंड सी पार्ट में इन्वर्जन हुआ है. ओके, now coming to the point mutation also, this is sometimes we come across this word also, point mutation. Point mutation means change in the single nucleotide. So point mutation means change in single nucleotide. It could be deletion, it could be insertion, it could be substitution. Substitution means there was sequence A and it has been replaced by T, or there was T, it has been replaced by A. So point mutation means जब single nucleotide में change होता है. Okay. Frame shift mutation means जब एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो जाते हैं, और एंड द रीडिंग फ्रेम चेंजेस. ठीक है, एंड द रीडिंग फ्रेम चेंजेस मीन्स या तो कोई पोर्शन इंसर्ट हो जाता है या कोई पोर्शन डिलीट हो जाता है, और एंड बिकॉज ऑफ दैट द रीडिंग फ्रेम विल चेंज. Let's discuss that what is that reading frame and what will the effect. The proteins, they will be built incorrectly. Means suppose first the protein A was built, now instead of A B is being built. So पहले आपका प्रोटीन A बनाया जा रहा था, अब आपका प्रोटीन B बन रहा है. ठीक है, लेट डिस्कस रीडिंग फ्रेम क्या होता है. नाउ सपोज करिए ये हमारा सेंटेंस है, फैट कैट एट द वी रैट. ओके, फोकस 3 वर्ड्स देखिए, THE, ये हमारी एक एक सीक्वेंस है 3 लेटर्स की. ओके, नाउ सपोज वी ऐड ए ऐड कर देते हैं हम हियर. हमने यहाँ पर ए ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर ए ऐड कर दिया. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैट टी से पहले हमने ए ऐड कर दिया है. सो देखिए द फैट इज ओके. नाउ इंस्टेड ऑफ टी व्हाट वी हैव का. सो टी विल शिफ्ट, isn't it? T will shift and tat will be there. Yes or no? T will shift. यहाँ पर हमारा जो है ऐड हो गया है, ए हमने यहाँ पर ऐड किया है. There is addition of T. So this will become CAA, isn't it? This will become CAA. So next will become TAT. Okay, next will become TAT.
Okay, so you will have TAT also here. Then you will have TET. Then you will have THEW. अब ये जो है फ्रेम चेंज होता जा रहा है, right? The frame is changing and only at is left. So that this is called frame shift mutation. कि जब हम कुछ ऐड हो गया है, कुछ डिलीट हो गया है और उससे पूरा सेंटेंस का फ्रेम चेंज हो गया है, that will be called a frame shift mutation. Okay, students, that will be called a frame shift mutation. Okay, I hope there is you've understood and there is no doubt. Okay, so let's come to your homework. Again, you will make the notes of this topic. Okay, you will make notes of the topic. You will read the topic from your book, that is mutation. Only a small paragraph is there. And then you will complete the question number 14. Okay, and if there is any doubt, students, you will communicate that doubt to me. Okay. Okay, bye everyone.